Welcome everyone. Thank you for joining us today for this session, the storytelling session from A Walk Along River Sindh. We're very excited to have you here. We're very excited to share these stories with you. Um, just giving you a sense of how the event flow is going to be. We're going to start with a brief intro presentation about Veditum India Foundation, followed by which we'll have our fellows from the Moving Upstream Sindh Fellowship who will be sharing their stories. After they share their stories, we'll have a small AV that we've prepared that we play for you, following which we will have the questions and answers. So we hope you enjoy today's session. At any point, if you have any comments or questions, please use the chat section or the Q&A section to ask your questions. And if you have any comments, please leave them in the chat. We'd be delighted to hear from you. And let's start. I'm going to begin with a short sort of intro presentation for Veditam and the fellowship as well. Right. I hope my screen is visible. If anybody can confirm. Yes. Yes, it's visible. Okay, all right. So I'm going to be a bit quick and brief with the presentation, but I hope you get a sense. The Moving Upstream Sindh Fellowship, which is what our fellows were part of, is hosted at Veditum India Foundation and is co-hosted by the Out of Eden Work. So I thought it would be beneficial for everyone to get a bit of sense of what this organization is and does. I prepared this, huge flowchart to tell you all about what Veditam does. But then I realized that this session today is about something else. So just to give you a very quick picture about all the different things that we do, we have a project called Moving Upstream. We have a project called City Water Walks. We have a project called Environmental Accountability, or a section of projects called on environmental accountability. We have internships going on with different people. We have a lot of publishing that we're doing. Starting with publishing, we do a lot of publishing in-house, but we're also working with independent researchers, academics, activists to do publishing. We do filmmaking, zines, photo exhibitions, or audiovisual work. And this is continuously increasing the scope of the kind of publishing that we're doing. And we're very excited about doing both digital and physical formats, as well as exhibitions and public spaces that we're entering. We're doing internships, which are of different kinds: design, research, media, and we're going to open up more opportunities in the coming future, including some social media internships, as well as design, research, and media internships. One of our projects called City Water Walks looks at how water flows from within a city. This is something that emerged out of our earlier practice of walking along rivers and along this the length of rivers, which is what our Moving Upstream project is. We've started a section of projects on the theme of environmental accountability, and we've been working on monitoring floods in Bihar with our friends at Make Pine Abhiyan, which is a Bihar-based NGO. And very recently, we've initiated a new project looking at sand mining monitoring, which is a huge space where our rivers are getting destroyed. There's large-scale corruption. So we're trying to look at that. The Moving Upstream project is sort of the flagship project that we have at Veditam. And we've walked along rivers Ganga and Ken, and we're currently also walking along River Mahakali. And as part of the Moving Upstream program, where I have been walking along rivers and our partners have been walking along rivers, we've initiated a fellowship program called the Moving Upstream Fellowship, where we've, as of now, walked along the length of the rivers Betwa and River Sindh. And today we'll be listening to our fellows from who have walked the length of the River Sindh. Just to give you a geographical sense of where our work is placed, you can see the rivers that we walked are marked on this map. That's the Ganga, the Ken, the Betwa, the Sindh, and the Mahakali, which forms the border between India and Nepal.
is something that we are working on right now. We are walking along right now. And the City Water Walks project has happened in Ahmedabad, Mumbai, Chennai, and now starting in Kolkata. So the hope is that slowly we'll expand where we are. We're hoping to take the fellowship next in the northeast of India, further west and further south as well. So that's something that we're looking at. And today, this is what we are sort of focusing at. Today, we are focusing at River Sindh. Just to give you a broad sense of what the location is. From the previous map, you can see that this is where the River Sindh is in India. It starts in Madhya Pradesh, flows mostly through Madhya Pradesh, and then enters Uttar Pradesh for a little bit, where it meets the Yamuna. And this is the trajectory of the river. You can see the river basin marked, some popular locations marked along the river. And this is the larger landscape, which includes a fascinating area called Pachnada, where 5 rivers come together and meet. Unfortunately, Poorva, who had walked that section of the Sindh, is not here with us today in this call, but hopefully we'll have more storytelling sessions where you can hear about that. Following which there is the walk that happened from Sionda upwards till Narwar. Aishani and Rahul will be talking about that. Further from Narwar, Bageshwer and Pooja walked for about 2 weeks. And from the point that they left, which is where this arrow points at, that's where Vaishnavi and Aoun walked from. And they all walked upstream. So the walk started here at Pachnada and then went all the way along the river close to the source. And I think I'll let the fellows talk about it and explain it. And we're slowly trying to see how many more rivers we can walk in this region and also understand that over time. Quickly sharing with you a few questions that we ask, or a few questions that we're trying to ask with our larger work. In context of rivers, where do people go when the river meanders? What water do they drink? We're trying to document changing riverscapes. This is an image from West Bengal where the Farakka barrage has completely transformed what the Hooghly River is. What is the kind of water knowledge that we hold? Is there any traditional knowledge that we hold? What does that mean? Is it translating between generations or not? Is it moving between generations or not? People have so many memories, not just floods, but everything to do with rivers, the riverscape, the landscape. In the absence of documentation, a lot of this gets lost. But how can we document which is respectful, which is inclusive? So that's also a question or an idea that we take with us when we're walking along rivers. We're also very conscious of the fact that a lot of the landscapes that we are moving through are threatened because of many disastrous projects, including the Ken-Betwa River Linking Project, which is going to destroy the forest that you see on the screen, which is absolutely heartbreaking, but something that we must work towards. And we're trying our best to work with partners to see how we can protect these landscapes. Community knowledge and generosity is something that is the base of all the work that we do. We rely on people, on their generosity to keep us going, to sort of take us day by day through their riverscape. And all of what we do, essentially, we hope is eventually going to go back to them and benefit them in some ways. Whatever we're doing, we're trying to record that in various formats. This is a screen grab of these are pictures of notes from one of our fellow Kabini's work, who was part of the Moving Upstream Betwa Fellowship. We also made zines that we have now distributed across India at events, at exhibitions, at festivals, something that I was hinting at earlier in terms of what we're trying to do with our work. And this is today is the fourth in a series of webinars that we've done based upon the long walks that we've done along rivers. Early in the pandemic, we had done sessions talking about our walks along River Ken, River Ganga, and River Betwa. We've made a film from walking along the River Ganga. It was a 3,000-kilometer walk. I'll put a link to the trailer for the film in the chat box later on so that you can go and take a look. We're hopefully going to release this film in a month on our website, so you can then watch it on the website.
And yeah, very recently we also were part of exhibitions. This is one set of pictures, but we've also been part of other events and exhibitions where we try to take our work to more people, especially young minds. So we often go to schools and colleges and speak to kids, which is something that I really enjoy doing, and we hope to do more of this in the future. Uh, Going forward, I think we want to continue working intensely with our communities and partners as organizations and as citizens, but importantly, also work outside the limited bounds of the internet and convenient infrastructures, which is where walking plays an essential part. Walking plays a very important part in taking us outside the limited highways of the internet and convenient infrastructures, which include roads. So I'm going to pause with that and let the fellows take the floor and share with us their stories. I will first invite Aishani to start sharing stories from her work. Aishani? Yes, I'll just share the screen. Okay. हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। तो राहुल और मैं सिंध नदी के साथ सियोड़ा से नरवर तक चले थे। तो उसकी कुछ कहानियां, कुछ विजुअल्स दिखाएंगे, लोगों के बारे में बात करेंगे जिनसे हम मिले थे, जो नदी के साथ में रहते हैं, नदी के पास में रहते हैं। सियोड़ा एक रिलीजियसली इम्पोर्टेंट टाउन कह सकते हैं जो सिंध नदी के पास था। वहां से हमने शुरू किया और नरवर जहाँ हमारा वॉक खत्म हुआ, वहां पे दो इम्पोर्टेंट डैम्स हैं और उसके बारे में भी आप सुनेंगे। तो ये मैप जो सिद्धार्थ ने भी बताया, उसमें आप सिंध नदी का बेसिन देख सकते हैं और उसी के नीचे है बेतवा का रिवर बेसिन। बेसिन की मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि वो एक एरिया है जहाँ का सारा पानी उस नदी में, जैसे कि सिंध नदी का सारा पानी सिंध में ड्रेन आउट होता है। और क्योंकि ये पास पास में है तो उनके कुछ इंटरेक्शंस की मैं बात करूंगी। तो एक गांव से हम निकले थे जहाँ पे ये कैनाल था और ये करीबन सिंध से 2 किलोमीटर दूर ये कैनाल था। और जब हमने कैनाल के बारे में, खेती के बारे में बात की तो लोगों ने बताया कि ये पानी जो है कैनाल में आ रहा है वो आ रहा है बेतवा से। तो ये है बेतवा और ये कैनाल में बेतवा से पानी आ रहा है। और उन्होंने ये भी बताया कि इसमें जब पानी ज्यादा हो जाता है कैनाल में तो एग्जिट चैनल्स और से इसे सिंध में ही ड्रेन आउट किया जाता है। तो पानी बेतवा से कैनाल्स में हो करके सिंध में जाता है। तो ये जो 2 किलोमीटर दूर सिंध से जो दूर कैनाल थी, उसमें पानी बेतवा से करीबन 92 किलोमीटर दूर से आता है। तो ये एक उसी के साथ की एक बात है कि जैसे हम सिंध के करीब चल रहे थे और रास्ते पे हमने देखा कि सिंध बेसिन के अंदर बेतवा की पानी की बोतल के अंदर पेट्रोल बेचा जा रहा है। और एक ऐसे ही कुछ फिर हमने जैसे हमने चलना शुरू किया, उससे पहले कुछ तैयारी की थी। हमने थोड़ा मैप आउट किया था कि नदी कैसी फ्लो होती है, आसपास कौन से गांव हैं। हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि 2021 में बहुत बड़ा फ्लड आया था नदी में और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि ब्रिज वगैरह को काफी नुकसान हुआ था। तो वो कुछ चीजें हम लेकर के शुरू हुए थे। और जब हमने वॉक शुरू किया तब हमने इन टूटे हुए ब्रिजेस को एक्चुअली हमारे आंखों के सामने देखा। और वो जो जूम्ड आउट एक चीजें पता चली थी, वो एक्चुअल में देखकर ज्यादा समझ आया कि इस फ्लड की इंटेंसिटी और इफेक्ट क्या रही है लोगों पे। तो कंक्रीट के जिन्हें हम मजबूत समझते हैं ब्रिजेस, उनकी ये हालत थी। और ये एक नहीं, ये 3 जगहों पे, ये दूसरी जगह है जहाँ हमने ये ब्रिज टूटे हुए देखे। और
ये तीसरी जगह। और ये है सियोड़ा का ब्रिज, जहाँ से हमने जो पहला नजारा सिंध पे देखा था, वो पहला नजारा ये टूटा हुआ ब्रिज था। और हम गांव गांव घूम रहे थे और लोगों से मिल रहे थे, और लोग ये उसी 2021 के बाढ़ की बात कर रहे थे और पॉइंट आउट करके बता रहे थे कि पानी का लेवल यहाँ तक आ गया है, उस पेड़ तक, दीवार के इस हाइट तक आ गया था। तो एक इमोशनल बातें वो एक्सप्रेस कर रहे थे, और समझ आ रहा था कि उनपे उनके लिए काफी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहा होगा। हमने देखा कई गांवों में घर गिर गए हैं, वो टेम्पररी कुछ अपना व्यवस्था करके रह रहे हैं। लोगों को बाढ़ के वक्त सूचना नहीं मिली थी कि आप घर खाली करें, कोई सेफ जगह पर जाएं, पर और उन्हें रातों रात अपना घर, अपना गांव, कुछ सामान ले जा पाए। कई सारा सामान उनका बह गया पानी में, और इस तरह से उन्होंने कुछ उन्हें 2-3 दिन कहीं ऊंची एलिवेटेड जगह पे बिताए, कुछ लोग कई हफ्तों तक उन्हें वहां रहना पड़ा था। खेती पे भी किसानों ने बताया कि जो उपजाऊ टॉप सॉइल होती है वो पूरी बह गई। उनके जो उन्होंने उगाया था वो सारा बह गया। उन्हें आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स और कहीं और से मिट्टी ला करके वापस उन्होंने शुरू किया है खेती करना। तो ये लोगों से हमें सिंध पे जो बाढ़ आई थी उसकी कहानियां सुनने मिली। पर अब मैं थोड़े विजुअल्स दिखाना चाहूंगी कि जैसे हमने वॉक शुरू किया, जैसे ये सियोड़ा में सिंध नदी ऐसे दिखती है, तो आगे हमने किस तरह के नजारे देखे सिंध के। कहीं पे पथरीली जमीन थी, कहीं पे रेत थी, कहीं पे दोनों ही था। और यहाँ पर आकर हमारा वॉक खत्म हुआ। ये है मड़ीखेड़ा डैम। और सिंध नदी के जस्ट बगल में हमें इस तरह के लैंडफॉर्म्स, अलूवियल रवाइंस देखने मिले। सैंड और पत्थर, बजरी, खेत, कांटे वाले बीहड़, और इन्हीं के थ्रू हम साथ साथ चले थे। कुछ खेती की बात करें तो खेती भी हमने बदलती देखी जैसे जैसे हम अपस्ट्रीम चलते गए। तो पहले तो हमने देखा कि बहुत सारे खेतों में राई या मस्टर्ड उगा है। फिर आगे चलते गए हम धीरे धीरे, तो अ, हमने रिवर बेड पे होती हुई खेती भी देखी। हमने आगे और चलते गए तो गेहूं और फिर गन्ना भी उगते देखा। और गन्ना जैसे उगते देखा, वहां पे धीरे धीरे कुछ आवाजें सुननी से शुरू हो गई, जैसे कि कोई मशीन चल रही है। और थोड़ा आगे चलते गए तो हमने ये देखा, और राहुल ने बताया इन्हें कोलू कहा जाता है। ये छोटे छोटे वर्कशॉप्स होते हैं जहाँ उसी गन्ने में से गुड़ बनाया जाता है। तो हमने ऐसे ही कोलू में एक जा करके देखा कि कैसे गन्ने का रस निकलता है, उसे उबाला जाता है, उसे ठंडा करके सांचे में डाल के ऐसे गुड़ की ईंटें बनाई जाती है। तो वही दिन था जहाँ जब हमने एक गन्ना भी खाया खेत से, और गन्ने का जूस भी थोड़ा सा ले लिया कोलू से, और चखने को थोड़ा गुड़। और ये राहुल और मैं हैं उसी गन्ने का जूस, थोड़ा एनर्जी लेने के लिए वो जूस लेते हुए फिर आगे चल दिए थे हम। तो आपने जो आगे एक पुल की जो इमेज देखी थी जहाँ टूटे हुए पिलर्स थे, उसी एक पिलर पे ऐसे मगरमच्छ से सावधान के साइनेज देखने मिले थे। उसी के पास ऐसे कुछ और साइनेजेस देखने मिले थे, और लोगों ने भी हमें काफी वार्न किया था कि आप नदी के साथ चल रहे हैं, ध्यान से चलिए, आपको इस स्ट्रेच में मगरमच्छ मिलेंगे। और हमने
आगे करीबन 4-5 जगह तो मगरमच्छ देखे ही थे। ये थोड़ा सा जूम्ड इन इमेज है, तो पर आप देख सकते हैं कि बीच में एक पत्थर है, वहां पे एक ब्राउन ग्रे कलर का आपको मगरमच्छ दिखेगा। और कुछ लोगों के आर्टिस्टिक और स्किलफुल एक्सप्रेशन की जो ऑब्जर्वेशंस थी वो यहाँ पे मैं बताऊंगी। और यहाँ पे कुछ और विजुअल्स और इमेजेस हैं जो बहुत ही खूबसूरत, जो फ्रंट वॉल होती हैं उन्हें बहुत ब्यूटीफुली पेंटेड और डेकोरेटेड तरीके से दिखती हैं। ये एक डाक घर है पोस्ट ऑफिस खमरोली गांव का। आपको टाइल्स दिखेंगी, ब्रिक्स दिखेंगी, कहीं पे वुड दिखेगा। आप फ्लोरिंग में देख सकते हैं कि जो स्क्वायर्स पेंटेड है वो पासी के एक मिट्टी से, लाल मिट्टी से बनाए गए हैं, मिट्टी, गोबर और पानी के मिक्सचर से। ये नोतिया गांव का पोस्ट ऑफिस है। यहाँ पे आप फ्लोरिंग में देख सकते हैं कि किस तरह से लेवल्स के डिमार्केशन या प्राइवेट पब्लिक पार्ट्स ऑफ द हाउस जो है उसके डिमार्केशन वो फ्लोरिंग में किए गए पेंट से आप देख सकते हैं। और ये कुछ बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, वुड से लेके ग्रास, गोबर, मिट्टी, टाइल्स। Aishani, just a quick time check. यस, तो ये जो है सिंध के आसपास और सिंध से मिली हुई कुछ चीजें हैं जो वहीं पे मैं छोड़कर वापस आई हूँ, बस फोटोग्राफ्स के थ्रू आपको दिखाना चाहती हूँ। आसपास की घास, मिट्टी, पत्थर, कांटे। और इसे भी मैं सिंध से मिली हुई कुछ मेमोरीज या डॉक्यूमेंटेशन कह सकती हूँ। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम एंड अराउंड सिंध। ओके, थैंक यू। और राहुल भी इसी स्ट्रेच पे कुछ और बातें करेंगे। तो यस राहुल, आप। Thanks, Aishani. That was a lovely stroll through your walk. Just for attendees who may not understand Hindi, I am also typing brief English translations of what the speaker is saying in the chat box. So just saying that. Rahul, आप प्रेजेंट करना चाहेंगे अब? एंड सॉरी, मेरे से गलती हो गई थी पहले, आई थिंक वीडियो शायद ऑन नहीं हो रहे होंगे। राहुल, आप वीडियो भी ऑन कर सकते हैं आप चाहें तो। आप म्यूट पर है। हेलो हेलो। हाँ जी जी नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को मेरा नमस्कार। तो ऐशानी ने जैसा बताया, उन्होंने नदी की बात की और उसके बाद उसको लोगों से भी जोड़ा और लोगों के रहन सहन से, उनके जीवन से भी जोड़ा। तो मैं जो अपनी बात कहूँगा उसमें नदी से जीवन कैसे जुड़ा हुआ है उस पर मेरी कोशिश होगी कि मैं ज़्यादा बात कर सकूं। तो मैं अपना प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ। जी मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? जी जी, आप स्लाइड शो मोड पे जा सकते हैं। जी, तो ये दिख रहा है। सिंध एक बहुत ही खूबसूरत नदी है और बहुत लंबी नहीं है, 550-600 किलोमीटर लंबी है। लेकिन मैंने जितनी नदियों को देखा है, बहुत सारी नदियों को देखा है, तो सभी नदियां अच्छी होती हैं। कुछ को हम बुरी बना देते हैं, गंदा कर देते हैं, तो वो ठीक है। लेकिन सिंध एक काफी खूबसूरत नदी है और उसको देखने का एक हमारा अनुभव बड़ा दिलचस्प रहा। खास करके जब सेवड़ा में हम गए और वो एक टूटा हुआ पुल देखा और फिर सामने एक सनकुआ धाम, एक वो धार्मिक स्थल है,
जो मध्य प्रदेश में और आसपास उत्तर प्रदेश बगल में है या राजस्थान है, तो वहां से भी लोग काफी आते हैं। तो जो नदियां हैं वो जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं, हर तरह से सिर्फ खेती को ही नहीं प्रभावित करती हैं, और उससे जितने पेशे जुड़े हुए हैं या जीवन के जितने सरोकार हैं या पक्ष हैं, सबको प्रभावित करते हैं। ये एक वहाँ के स्थानीय पंडा है सोनकुआधान के, तो इन्होंने बताया हमें कि बाढ़ की वजह से जो है पुल टूट गया, और पुल टूट जाने की वजह से वहाँ पे आवक कम हो गई है तीर्थयात्रियों की, और हमारा जो है रोजगार काफी प्रभावित हुआ है। तो खेती तो बर्बाद होती है, लेकिन जो दूसरे पेशे के लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं, उनकी भी आजीविका किस तरह से ये प्रभावित होती है। फिर जैसे ये एक बिहारी रावत हैं, ये किसान हैं, और धूमेश्वर जो मंदिर है बहुत ही प्रसिद्ध शंकर जी का मंदिर है। तो धूमेश्वर के पास ही इनका इनका घर है, मंदिर से आधे किलोमीटर पौने किलोमीटर की दूरी पे। तो ये बाढ़ की वजह से, अपना घर टूट जाने की वजह से, ये अपने खेत में ही एक 4 फीट हाइट की एक झोपड़ी, ऊंचाई की झोपड़ी बना करके अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। और इनकी दुकान थी, वो दुकान भी ध्वस्त हो गई, और इस गांव में को काफी नुकसान हुआ बाढ़ से। तो ये चीजें हैं। फिर मैं थोड़ा प्रेजेंटेशन को पहले इसको बता देता हूँ, फिर मैं शब्दों में बात कहूंगा। तो ये बड़ौन कला जो मध्य प्रदेश का ये सिंध नदी पे सबसे बड़ा रेत माइनिंग साइट है, और दतिया जिले में जितनी रेत की माइनिंग होती है, अकेले उसका 1/3 इस जगह पे वो जाने का रास्ता है। ये काफी हमें तो एक भी आदमी नहीं दिखा पैदल हेलो राहुल, हेलो। आई थिंक कुछ टेक्निकल इशू है विद द इंटरनेट। लेट्स जस्ट गिव इट अ मिनट in case. Okay, I'm going to try contacting Rahul. I think I'll try contacting Rahul. In the meanwhile, should we start with the next presentation, or give me a minute? I'll just confirm with him. Okay, so for some reason, Rahul's internet connection got disconnected. In the meanwhile, there's a question from Manoj Mishra ji. Aishani, would you want to answer this while we wait for Rahul? Yes. तो मनोज जी ने पूछा है कि जो डैम्स का गेट खुलना और फ्लड आना, उसमें कुछ रिलेशन है। तो एक तो लोगों से कई जगह पे सुनने को आया कि मड़ीखेड़ा के 10 गेट्स हैं, मड़ीखेड़ा डैम के 10 गेट्स, उन्हें एक साथ खोल दिया गया था। और हमने कुछ उसके बाद डैम का गेट ओपनिंग डेटा भी देखा था। तो जब फ्लड आया था 3 अगस्त 2021 को, तो 2 और 3 अगस्त को ये तो था कि बारिश भी बहुत तेज आई थी। पर हमने ये भी देखा डैम ओपनिंग डेटा में कि ऐसा नहीं था कि एक गेट खोला हो, दूसरा गेट खोला हो, ये देखते कि बारिश बढ़ रही है तो धीरे धीरे पानी छोड़े। बट ये था कि 3 अगस्त के सुबह के टाइम पे सारे 10 गेट 75% कैपेसिटी पे एक साथ खोल दिए गए थे। तो ये जरूर था कि हो सकता था कि शायद धीरे धीरे कुछ गेट्स खोलते तो इस इंटेंसिटी के फ्लड नहीं आते। सॉरी हेलो
मैं कनेक्ट हो चुका हूँ, सॉरी मेरा इंटरनेट डिस्टर्ब हो गया था। हेलो, जी राहुल मेरी जी। आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है आवाज। हम बस एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे, आपका जी वेट जी। है, तो आप फिर से हाँ, start कर सकते हैं जहां से छूटा था, आप वहां से स्टार्ट करें। तो ये मेरा दिख रहा है स्क्रीन। जी मैं बात कर रहा था ब्राउन कलर की, जो सबसे बड़ी रेत माइनिंग की साइट है दतिया जिले में। और दतिया में जो रेत की जरूरत होती है, वहाँ जितना रेत होता है या उसका जो आकार है, भौगोलिक आकार है, वो उसका 1/3 अकेले इस जगह पर है। तो और सिंध में काफी रेत का ये खनन होता है। दूसरा, सिंध के किनारे जो बसे हुए गांव हैं, वो मुझे आधारभूत जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें मुझे काफी पिछड़े हुए दिखे। जो मैंने महसूस किया, मैं बिहार में घूम रहता हूँ, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में रहा हूँ और बंगाल भी घूमता हूँ। तो बिहार का जो कोसी का जो इलाका है, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो मुझे मतलब काफ़ी वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के मुझे काफ़ी वहाँ देख करके दुख भी हुआ, अफसोस भी हुआ कि ऐसे हालात हैं। मैंने देखा एक गांव में कि रोड उस जनवरी के महीने में, जनवरी फरवरी के महीने में जो एक ट्रैक्टर बुरी तरह से कीचड़ में फंसा हुआ था, बीच सड़क पे फंसा हुआ था। मतलब ये ठंडे के दिनों की ये स्थिति है, तो आप बारिश के दिनों का आकलन कर सकते हैं। ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर बहुत सामान्य सी तस्वीर है। इससे बहुत ही विभत्स तस्वीरें हैं, बहुत ही बुरी तस्वीरें हैं जो वहाँ के हालात को बताती हैं। तो ये इस तस्वीर में यही है कि रोड के बिल्कुल बीचों बीच ये पानी का बहाव हो रहा है। और आधारभूत संरचनाओं के अभाव से महिलाओं को दिक्कत होती है। उनकी कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है पास के कस्बे से, शहरों से। तो हालांकि सिंध पर आबादी का लोड नहीं है, कोई बड़ा शहर नहीं है, सिटी नहीं है, कोई भी सिटी नहीं है सिंध के किनारे। सब टाउन है, छोटे, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के। तो जो शहरी प्रदूषण है, उससे अब तक उसको उतना नुकसान नहीं हुआ है, या जो गांव के भी प्रदूषण है। लेकिन बहुत सारे जगहों पे हमने देखा जो नज़दीक के गांव हैं, मतलब 100-200 मीटर पे की दूरी पे, तो उनका पानी ये सीधे बह करके जो है नदियों में जाता है। तो ये एक चिंता की बात है। लड़कियों ने एहसानी से बहुत सारी कहानियां जैसे ये मुझे बताती थी, या हम लोगों ने जो महसूस किया, कि वो पढ़ने नहीं जा पाती हैं। उनकी वो पढ़ाई करने की इच्छा होती है, लेकिन उनकी सुरक्षा की चिंता होती है उनके माता पिता या घर वालों को। और उनकी इच्छाएं दबी रह जाती हैं, वो शिक्षा से वंचित हो जाती हैं। तो ये एक महिलाओं और नदी दोनों को इस तरह के प्रदूषण से या इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव से उनको क्षति है। सूखा और बाढ़ दोनों से पशुओं का संकट बहुत गहराता है। आधुनिक समय में हम लोगों ने खेती की बहुत सारी विधियां अपना ली हैं, और सॉरी, स्टोरेज की, और हमारे पास बहुत सारे स्टोरेज हैं। मैं इसको इस तरह से कनेक्ट करता हूं कि मैं कुछ महीने पहले बंगाल में था, तो बंगाल में बहुत सारे धान की मिलें हैं। तो मेरी एक मुलाकात हुई एक धान मिल के मालिक से, उनके कई सारे धान मिल। तो उन्होंने बताया कि हम लोगों को संकट होगा, किसानों को संकट होगा, लेकिन सरकार को चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि उनके पास बहुत स्टॉक है। तो ये है कि हमारे पास बहुत स्टॉक है अनाज का। अगर 1 साल 2 साल नहीं भी होगा तो नहीं दिक्कत होगी, लेकिन महंगाई जरूर बढ़ेगी। लेकिन पशुओं के साथ किस तरह की दिक्कत होती है, ये आप इस तस्वीर में देखिए कि ये सड़ा हुआ एक किसान परिवार ने हमें दिखाया और बताया उस समय कि 1500 से 1700 रुपया क्विंटल बिक रहा है। मतलब जो आदमी के लिए खाने के लिए जो न्यूनतम मूल्य 25 से 30 रुपए में जो अनाज मिलता है, उससे बामुश्किल पशुओं के लिए जो चारा है वो 8-10 रुपए का अंतर है। मतलब उसके 2/3 हिस्से तक पहुंच चुका है। तो पशु को पालना कितना मुश्किल काम है, जबकि सिंध के किनारे के लोग जो है खेती के बाद सबसे अधिक पशु पर निर्भर है। उनके पास नौकरी उस तरह से नहीं है, उनके पास उस तरह से बिजनेस नहीं है, और वो कोई कॉर्पोरेट नौकरी नहीं करते हैं। वो ज़्यादातर महानगरों में कुछ छोटी नौकरियों में होते हैं, जो बहुत नियोजित नहीं होती है। तो ये एक काफ़ी नुकसान है बाढ़ से। अभी मैं झारखंड में रह रहा हूँ, और मैं झारखंड में अभी कुछ सूखे को लेकर के मैंने दौरा किया, तो मैं झारखंड से भी इसको कनेक्ट करता हूँ कि सूखा, बाढ़ हो या सूखा, दोनों पशुओं पे किस तरह का संकट। जैसे
यहाँ भी चारे का दाम अभी दोगुना हो चुका है, दिसंबर लास्ट में, अभी शायद तिगुना हो जाए। तो ये पशुओं को बहुत परेशान कर, पशुओं के लिए बहुत चिंता की बात है, चाहे बाढ़ हो या सूखा, दोनों ही स्थितियां। ये एक तस्वीर है, एक धौर्रा गांव है, वहाँ सुजान सिंह बघेल, हम जब वहां से बढ़ रहे थे रतनगढ़ माता मंदिर के पास से नदी को पार करते हुए, तो हम हमारे पास 1 घंटा और चलने का समय था। तो उन्होंने, मास्टर साहब ने हमें रोक लिया और कहा कि आप आओ। और आज उन्होंने हमें कई जगहों पे लोग हमें रोकना चाहते थे, खास करके 3:30-4 बजे तो सूर्यास्त होना शुरू हो जाता है ठंड के दिनों में। तो हम कोशिश करते थे कि 1 घंटे और चलें, 1 घंटे में हम 3-4 किलोमीटर चल जाएंगे, तो हमारा वो कवर बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे हम रुके, इनके कहने के बाद हमारे पास 1 घंटा था। उन्होंने बोला कि आप जाओगे तो मैं अगले गांव में बता दूंगा, मेरे जो परिचित है, लेकिन इनका काफी आग्रह था और गांव के लोगों का भी काफी आग्रह था, तो हम रुके। तो ये अज्ञानो बोलते हैं बुंदेलखंडी में, मतलब जिसे हिंदी में सभी लोग अलाव के रूप में समझते हैं। तो वहाँ पे हम रुके और गांव के बुजुर्ग एक आए, तो मास्टर साहब हमारे साथ कुर्सी पे बैठे हुए थे। हमें खुद कुर्सी पे बैठना अच्छा नहीं लग रहा था, हम बार बार नीचे चाह रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे नहीं। और फिर मास्टर साहब उतर गए नीचे से। तो एक महेंद्र सिंह यादव, एक बुजुर्ग आए, तो उनके सम्मान में, वो गांव के बहुत सम्मानित और उनसे उम्र में बड़े थे, तो उनके सम्मान में वो नीचे दरी पर आकर के बैठ गए। ये जो पैर दिख रहा है ना, ये उनका है, मास्टर साहब का है। बाद में वो, तो महेंद्र सिंह यादव जी, इस फ्रेम में तस्वीर उनकी नहीं आ पाई है और तस्वीर मैं बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाह रहा था। तो महेंद्र सिंह यादव ने बताया कि पहले हमारा गांव जो था बिल्कुल ही नदी के किनारे था, अभी 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर है। तो जब हम वहाँ पे रहा करते थे, तो हमारे साथ बहुत दोहरा संकट होता था। रात में डकैत हमें तंग करते थे, वो आते थे और हमसे अनाज मांगते थे, सब्जियां मांगते थे, तेल मांगते थे, चूल्हा मांगते थे, लकड़ी मांगते थे। और वो खाना बनाते थे, खाते थे, अपने समूह के साथ आते थे, रहते थे और अपना काम करते थे, जो उनका पेशा था। और फिर सुबह पुलिस आ जाती थी और हमें पीटती थी रात में। वो तो हम बहुत मुश्किल में होते थे। तो इस तरह की स्थितियां थी, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। और सुजान सिंह ने बताया कि किस तरह से जो वो मगर हैं, मगर बोलते हैं, तो उनका और मनुष्यों का टकराव किस तरह से बढ़ा है, किस तरह से उनके बगल के गांव के एक बच्चे का वो हाथ काट लिया। तो इसको कई सारे लोग ऐसे मिले, जैसे फॉरेस्ट स्टाफ मिले, वनकर्मी मिले, तो उन्होंने भी इसको रेत माइनिंग से कनेक्ट किया। ये राहुल, जी, 2 मिनट और। अच्छा ठीक। सिंध के किनारे ये सूखी लकड़ियां चुनते हुए एक दंपत्ति हमें मिले। इन्होंने अपनी ये उज्ज्वला योजना की हकीकत भी बताई कि किस तरह से उज्ज्वला योजना वो जानते भी नहीं है, और उनको उसका कोई लाभ नहीं मिला है, ये लकड़ी से ही, और इनको काफ़ी क्षति हुई बहुत और फिर जो है बाढ़ से भी इनको क्षति हुई है। और इसी तरह से हमने ये भी महसूस किया कि जो स्वच्छ भारत अभियान है, वो उसकी भी स्थिति अच्छी नहीं है, प्रचार बहुत ज्यादा है दोनों चीजों का। ये 2 केवट बंधु, हमें एक गांव में हम गुजर रहे थे, तो वहाँ के एक प्रभावशाली परिवार थे वो, तो ये उन्होंने कहा कि ये आप थोड़ा सा इनको वो रास्ता दिखा दो, थोड़ा जंगल झाड़ जो है उसको पार करवा दो। तो इन्होंने, और कुछ दूरी हमारे साथ ये आए, लगभग 10-15 मिनट, और फिर उन्होंने आसानी से पैर छू करके आशीर्वाद लिया। और यात्रा के शुरुआत में जब हम सेवड़ा से कुछ आगे बढ़ रहे थे, तो कुछ महिलाओं ने खुद, उन्होंने बताया, हम नहीं जानना चाहते थे कि उनकी जाति क्या है, वो उन्होंने बताया कि वो खुद बताया कि हम दलित हैं। और मतलब उनके बताने का तात्पर्य यह था कि हम आपके शरीर में स्पर्श नहीं करेंगे, और ये हमारे लिए एक खराब अनुभव था, लेकिन उन्होंने ऐसानी के सामने धरती को छू करके उनको आशीर्वाद दिया। तो ये जाति प्रथा और ये सब चीजें भी हमें वहाँ पे देखने को मिला। ये हम एक शाम इंदरगढ़ थाने में पहुंचे, वहाँ पे शायद परमानंद शर्मा नाम है उनका, थानेदार इंस्पेक्टर जो भी हैं। तो उनसे मदद मांगने पहुंचे, तो उन्होंने हमारी खातिरदारी की, और हमने कहा कि हमें हमारे रुकने की व्यवस्था आप करवा दें इस कस्बे में कहीं। तो उन्होंने हमसे हमने उनको सारी बातें बताई कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने किसी दारोगा को कहूंगा कि ठंड में तुम जाकर के उस जगह की रिपोर्ट करके आओ या वहाँ चले जाओ, तो वो नहीं जाएगा, लेकिन आप अलग अलग दूरी से, इतनी दूरी से आए हैं और समाज के लिए काम कर रहे हैं, नदियों को समझ रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। और उन्होंने बाहर निकल करके कहा कि अपनी टीम के साथ कि आपको हम सैल्यूट करते हैं। तो ये हमारे लिए एक अलग किस्म का अनुभव था। ये चाचा, कल्लू चाचा हैं, कल्लू साव इनका नाम है, कल्लू साव। तो ये इन्होंने काफी कोशिश की हमें रोकने की,
हमने कहा कि चाचा हम इसी तरह रुकते रहेंगे तो हम कैसे आगे अपनी यात्रा पूरी कर पाएंगे। तो इन्होंने कहा कि ठीक है तुम जो बेटे जाओ, लेकिन कोई दिक्कत होगी तो मुझे फ़ोन करना, मैं अपने लड़कों को भेज करके तुम दोनों को मंगवा लेंगे, और हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जब अगली जगह पहुँचे डबरा, तो डबरा में पहुँचे तो इन्होंने फ़ोन किया कि क्या बेटा तुम्हारे रहने की व्यवस्था हो गई है? तो हमने कहा कि हाँ, हमारे रहने की व्यवस्था हो गई है। तो ये लांच और डबरा के बीच मैं एक डेढ़ मिनट लेना चाहूँगा। लांच और डबरा के बीच गन्ना की खेती काफ़ी होती है, काफ़ी सारे कोल्हू हैं, कोल्हू के बारे में ऐसानी ने बताया। तो जो डिसेंट्रलाइज मतलब विकेंद्रीकृत व्यवस्था जो है, और मैं भी जिस गांव से आता हूं या मेरे ननियाल में काफ़ी सारे वो कोल्हू और ये गन्ना की मिलें हैं। तो अभी क्या है कि उस पे किसानों का नियंत्रण है, किसान उसके मालिक हैं, किसान संचालित करते हैं। जो 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 थोड़े बड़े गन्ना किसान हैं वो खुद उसका संचालन करते हैं, दूसरे छोटे गन्ना किसान उसमें देते हैं। लेकिन जब ये मिल बन जाएगा तो इसका पूरे सिस्टम पे इसका नियंत्रण हो जाएगा। और उन्होंने बताया, किसानों ने बताया कि यहाँ पे हमें तुरंत पैसा मिलता है या 2 दिन 3 दिन में मिलता है, लेकिन वहां पे हमें सप्ताह 15 दिन अभी इंतजार करना पड़ रहा है। जबकि वहां पर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की तरह चीनी मिल का अभी उतना उस तरह से प्रसार नहीं हुआ है। तो हमेशा यूपी और महाराष्ट्र की खबरें आती रहती हैं किसानों के इस संकट को लेकर के। और फिर जैसा उन्होंने ये भी बताया कि उर्वरक फर्टिलाइजर जैसे ऊपरी परत बह गई, तो कैसे जो उर्वरक कंपनियां हैं वो जा रही हैं और कह रही हैं कि हमारा उत्पाद खरीदो, तभी तुम्हारी मिट्टी अच्छी होगी, तभी तुम्हारी खेती करो। ये सिंध, मऊर और पार्वती का संगम है, हिनौतिया से कुछ आगे। तो ये एक तस्वीर है। धन्यवाद। ये एक शाम है और बहुत शुक्रिया मुझे वक्त देने के लिए। बस किस्से बहुत सारे हैं, बस मैं अभी अपनी बात यहीं खत्म करता हूँ। थैंक यू राहुल, थैंक यू अपनी बात शेयर करने के लिए। अब हम इनवाइट करेंगे बागेश्वर को। Bageshwar, please share your stories. Hello, very good evening, everyone. I'm really excited to share everyone the stories. I'll just share my screen. So, is it visible now? Yes. The photos are visible? Yeah, the grid is visible. Okay. Okay, is the photo visible now? Yes. Okay, so this is where actually we started the walk from Mohini Sagar Dam. There are 2 different dams, and then we actually met the river. So I'll be going like the journey we actually followed. So this was the first sight of the river we saw. Here we see the people are on the bridge on the down there is the River Sindh, and the people, no one actually crosses the river without worshipping the river. So this is where our bus stopped near the town of Narvar, and everyone breaks one coconut or light a lamp there, and then they cross the river just as a sign of worship for the river. And this actually strengthened when due to the floods of 2021, when almost all the villages were completely blown away by the water, because the floods came by the floodgates opening from the dam, and there was no proper flood warning and people were not prepared. So that was very scary moment for the people, and that's when their belief in the wrath of the river strengthened, and everyone started worshipping it. So moving further, this was the view from the Narvar Fort, and here you can see almost all the trees have a bent, unidirectional bent due to the floods of last year. And as we walked further, they were our host for the first day, and the next day on 13th of February, we started walking, and this was the site from the gates of the dam. This was the upstream, downstream, and this is the upstream, the dam. So see the contrast difference.
And we started walking from this, and this was the landscape from where we started walking. The whole so actually I am a wildlife biologist, so we were looking basically at plants and animals, and we were trying to understand how plants and animals and the biodiversity is linked with the people around. So this whole, you see the in the background there are trees, the big trees, and in the foreground the small shrubs. They all belong to the same tree called dhok, and the goats are the gardeners here. You see the goats are making the shape, making proper shapes for these trees. And this is how, this was the first day when we started walking. And this was the landscape. On our right side is the dam, and the left side there are villages and the fields. Wheat fields is there, the young wheat crop is seen there. You can see the green of wheat, and the on the hills the dhok tree is properly growing. It's a very prominent Aravali or Bundelkhand red region tree that grows there. And further, almost every evening we will find a place where we live. This was the sunset at village Nanakpur, just a few kilometers upstream of the dam, Mohini Sagar Dam. And then in that village, we just stopped there. On the right, on the lower right corner, you can see a small tube which people uses to cross the river. And on the other side of the river, there is the Madhav National Park. And this was this is a stove, the local stove which people use. Only the firewood is used. Interestingly, the government has provided the LPG or the gas services to almost all the villages, and almost all households are covered. But people, what we heard from the people, interestingly, they believe that they will have some digestion issues if they start using the gas and liquefied petroleum gas. And that's why only the fuel wood is firewood is used as the fuel. And this, they are cooking some sweet with the milk. And we visited 3 or 4 homes, and everyone offered us, and we had to eat a lot that day because everyone was like, you should have a meal with us, you should have a meal with us. So people were really excited to host us. So this was the group, the joint family which hosted us. Or it was the 3rd night there. And all of the people, the ladies, the head of the house, and then all of them are working. They are the daily herders, cattle herders. And further, this tree accompanied us all throughout the journey. It's Kulu Staculia species, and you see the small flowers. The bark is really interested, very smooth bark of this tree, and it's a very specific tree of this particular region, growing on a rocky slope. And there is the just upstream of the dam. This is downstream of the dam. This is the water. Very small streams of water we see. It's from the top of the hill where there was a temple, the Bageshwer temple, and this sign says that dam aage hai, means dam is just in front of us. And then we walked a few hundred meters, and this was the dam. It's Atal Sagar Dam or Madikheda Dam. Interestingly, the dam is named after a village, Madikheda, which was one of the 13 villages which were submerged when the dam was made. It was very recently made in 2007, and the people were relocated. All the 13 villages were relocated to nearby areas, some near the city or suburban areas. This was the dam, and just downstream of the dam, this is the situation of the river. So until now, we have not yet met the actual river. We are just following, moving upstream, and there was first dam, and this is the Madikheda Dam, Atal Sagar Dam. And this is the view of a village, Madikheda. One of the villages, the first village which was displaced when the dam was constructed in 2007. Around 1999 and 2000, the villages were displaced. And this is the village Madikheda. You see in the background, there are floodgates, and just in the front, this is the village. And all of these are the tribal household. Saharia tribe lives in that region. And all these are Saharia tribal households. And very interesting feature of the tribal household is they are
made of bricks and not bricks, they are stones and using mud as a cement. And almost all the houses will have one neem tree growing in it, which was very interesting. And neem tree will make a dominant and the most important feature of their courtyard. And just near the tree, you can see this is the one of the tribal households in that region. The situation of schools were really shocking in that area. You see, this is the village Madikheda. If you see closely, the roofs are broken. This is the school, middle primary school of that area. And the school, it seems like the school do not open, like it has not opened since many months. This was the situation of that school of village Madikheda. And the dam was made to construct electricity, to create electricity, to produce electricity through hydropower. But very ironically, all the villages which were displaced, either they have electricity connection for only a few hours in a day, or there was one village which do not have a connection at all. And these are the villages which were displaced after the dam's construction. And further, this is the bark of dhak, Butia monosperma. This tree, people, the local tribals, they are dependent on the forest produce for their livelihood. This is the gum from the bark of this dhak tree, or chola, called locally in Bundelkhandi. This tree, this gum is edible, and it's sold in the market for 100 to 150 rupees per kilogram. And this is one of the main livelihood of the tribal people in that region. And the tree bleeds like blood, so that's why I'm just showing this picture. This is the collection of the gum of this tree is one of the livelihood of tribal communities in that area. This was the dam, all on the left and right side. Both the dam is completely covered by bounded by the forests. And that day we walked around 25-30 kilometers, and very interesting walk all through the forest region, northern right deciduous forest. And this is langur very diligently eating the leaves of Reoncha, Acacia leucoflua. And it's covered with thorns, very big thorns, but the langur is eating it very intelligently. And further, when the dam was constructed, there were several canals which were started from that dam to irrigate the nearby areas. And this is one of the canal, and NABARD was the agency which was mentioned on the board nearby, that NABARD funded the construction of this canal. And you can see all of this agriculture is irrigated by the water from the dam. And this is another tree. It's yes. Time check, 2 minutes. Okay. This is also a tree from which the gum is collected. And further, it's we are walking to the village. This is again a tribal settlement, and this is the situation of the school from the next village. Again, this condition of a school was quite surprising, and this was the classroom, which doesn't look in a very good shape. And this village, this was people were displaced, and they resettled in a new location from just to the banks of the river to the location in which the whole village has only one hand pump, and the livelihood is still challenged after 20 years of relocation. This is one of the tribal household. This is when we just crossed the dam and the partially submerged village temple. You see the temple, the houses, very beautiful architecture, all of that in ruins after submergence from the dam. This is probably one of the bench in which cormorants are now sitting here. And this village, interestingly, it's the Karmai Kalam village. The village do not have electricity connection at all. It was one of the villages that were relocated after dam's construction. People are drying the bark of a tree, which they sell it. It's very good medicinal properties, which the tribal people sell. And this village, it's a sunset from that village, and
it's the well. There are two wells of that village. One of the well is used for drinking water and for bathing purposes, and this is the other well in which the crocodile lives. In the background, you can see the national highway, and here is the crocodile, which lives almost all the time near the well. So further after, and this is where we actually met the river. This is after 4th day. And this was the very clear, we used to drink this river's water. And this is the landscape of that area. It's one of the stream, Ayar Nadi, which merges with the Sindh River. Stone mining is quite prominent because all of it is a very rocky terrain. This village, almost all of the village houses were constructed from the stones mined from that village. It's village Kenwaha. You can see the whole building. It's made using the stones mined from that village. And here you see the goats are crossing and from the river, and on the right side is the bridge which was blown away by the floods of 2021. It's one of the medicinal herb, jungli pyaj, wild variety of onion. Further, the whole landscape changed as we moved further on. There's a whole bunch of langur, and then there's a whole plain area. The check dams are there to stop the water. The whole terrain landscape kept on changing. And this is one of the stream, completely different landscape. This is, we met different fields, legumes, and this is wheat and mustard in front of us. This is black buck. The whole flocks of black buck were there in this fields. It's a very interesting example of coexistence. People were also living along with the whole flocks of black buck in that area. It's a Scheduled 1 protected animal under Wildlife Protection Act, and very interesting example of coexistence. These are the flowers of coriander. It's a jungle cat in one of the villages. This was the group of ladies with SHG self-help group, in which people were saving monthly, doing some monthly savings, and very interesting example of collaboratively people are managing their finances. This is again another bridge, like Aishani was telling, after the floods. This was one of the bridge which was blown away after the floods of 21. This site was very scary site. It's only one picture I clicked from there. The stone crusher was there, the whole flock of black bugs. It was difficult. People were really trying to scare us away. They're thinking we are detectives or something, because probably they were doing some kind of mining activity which was not completely under the radar. So here we just have to run away from this region. This is the stone mining site of that area, near just on the banks of the river. So this was the whole, from starting from the 1 day to day 13th. And this was me and Pooja. We walked all through the journey. And yeah, thank you. Thanks, Bageshwer. I think there was a very fascinating presentation with lots of beautiful views of the river and wildlife. I think that's fascinating. Mohit has also commented about this. We'll move on to the next presentation. We'll take the questions once all the presentations are done. So I'll now invite Aoun to come on and share some stories. Hello, am I audible? Yes. And if you would like to switch on your video as well, you can do that too. Yeah, I will. I'll give you a time check at 10 minutes. Yeah, okay. Hello, everyone. And thank you, everyone, and thank you, Siddharth. Oh, so जिस तरह की हम फोटोज अभी देख रहे थे सिंध की, जो बहुत खूबसूरत थी, बहुत मतलब उसमें पानी इतना ज़्यादा दिख रहा था, तो जहाँ पे हमने वॉक किया है, हमने वैष्णवी ने, वो 3-4 दिन के बाद उसकी स्टोरी काफ़ी डिफरेंट हो गई थी. उसका एक अलग पहलू और अलग चीज़ आपको वैष्णवी आगे बताएंगी. एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जो रिवर आप लोग ने अभी तक देखी, इसका एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसका इम्पैक्ट बताना चाहूँगा. सो हम कुछ फार्मर्स से मिले और हमें पता चला कि पानी को इस्तेमाल कैसे करते हैं रिवर का.
सो अगर मैं एक फोटो पहले आप लोग को दिखा दूं, एंड आई एम वेरी स्लो विद स्क्रीन शेयरिंग। सिद्धार्थ आप बताइए, फोटो देखी जा सकती है स्क्रीन पे? जी। हाँ, सो ये फोटो और ये प्लास्टिक के पाइप हैं, ये 20 फीट के होते हैं, और ये पाइप यूज किए जाते हैं 5,000 6,000 यानी 7,000 फीट तक रिवर से पानी को ले जाने के लिए। ये एक एक करके जोड़ दिए जाते हैं। इनकी एवरेज कॉस्ट आती है 700, 500 या 1,000 रुपीज, डिपेंडिंग ऑन द डायमीटर ऑफ द पाइप एंड द क्वालिटी। और ये 5,000 अगर फिट आप रिवर से ले जा रहे हैं खेत में, तो 250 पाइप लगते हैं, और 250 को आप जो मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी कॉस्ट क्या हो। और इन पाइप को बिछाने की भी कॉस्ट होती है, जो जेसीबी से जब खोदा जाता है खेत, उसमें बिछाया जाता है, उसकी भी एक फिक्स कॉस्ट होती है। तो पानी नदी का कहाँ पे है, और वो हमें कहाँ पे जमीन के अंदर अंदर मिल रहा है। हाँ। इसी तरह ग्राउंड वाटर कैसे होता है, कि जब रिवर में पानी है तो ग्राउंड वाटर का लेवल क्या है। तो इसका एक एग्जांपल कि जो सिंध नदी का सोर्स है, लटेरी का एक गांव है गोपी तलई। हाँ, उसकी भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, एक लेजेंड आप कह सकते हैं। एक के दो बहनें हुआ करती थी, और वो यहाँ रहती थी, और इस यहाँ सूखा रहता था, पर वो जब जाती थी गड्ढे से पानी निकाल लेती थी। और माना जाता है कि एक दिन उनके फादर ने देखा कि वो कैसे इस पानी को ढूंढती हैं, कैसे वो निकाल लेती हैं, जबकि पूरे गांव में तो सूखा है। और जैसे ही उन्हीं ने उनको देखा जब वो नहा रही थी, तो जो दोनों बहनें हैं, सिंध और सखड़, तो सखड़ भी एक नदी है जो दूसरे जंगल की तरफ चली गई है, ये दोनों बह के निकल गई। हाँ। और तब से ये सिंध और सखड़ नदी का आप कह सकते हैं जन्म हुआ लेजेंड में, और आज उसको देखा जा सकता है। तो जो ये सिंध नदी है, यहाँ पे इस गांव में बोरवेल का एक बोरवेल हमने देखा, जिसको किसान ने बताया वो 920 फीट पे था, और उस बोरवेल से पानी गर्म निकलता है। तो आप ये देख सकते हैं कि सोर्स का भी ये कंडीशन है कि वहाँ 500, 600, 700 फीट एवरेज था। इसका बिल्कुल उल्टा 20, 30, 40 किलोमीटर के अंदर कुछ बोरवेल ऐसे हैं जो 20 फीट और 25 फीट पे हैं। एक बोरवेल में जब मैंने झांक के देखा तो मुझे पानी दिख रहा था, इतना हाइट पे पानी था, मतलब इतना आराम से हम पानी को देख सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि जिस रिवर की हम लोग इतनी देर से बात कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट क्या है, वो कैसे किसान को हेल्प करती है। हाँ, और पर इन सब के बावजूद कुछ जो किसानों से मिले, और उनकी मतलब सिर्फ रिवर की तो नहीं कहेंगे कि रिवर की क्या कह सकते हैं कंडीशन खराब है उसकी वजह से, कुछ जैसे आप कह सकते हैं करप्शन, या हमारे गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे उनको डिस्ट्रीब्यूट होती है। अगर उनको 10 घंटे इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, तो उनको 4 घंटे रात में मिलती है एक वीक, और अगले वीक 6 घंटे रात में मिलती है। कभी वो 1 बजे, कभी 2 बजे, और वो रात में जाके अपना जो पंप होते हैं उसको चलाते हैं। और तो इस तरह से जो रिवर की ये एक कह सकते हैं जो कनेक्शन होता है किसान से। तो 2 स्टेटमेंट मैं आपको बताना चाहूंगा जो किसानों ने हमसे बोले थे, मुझे ऐसे याद आ रहे हैं कि सोर्स पे किसान ने बोला था कि हमारी खेती सूखी खेती होती है। हाँ, हम तो पूरे साल अपने फार्म्स को पानी तक नहीं दे पाते हैं। और एक जगह हमने सुना था कि जो रात रात भर किसान जागता है, कभी पानी लगा रहा है, कभी पंप ऑन कर रहा है, इन सब से ही कनेक्शन मेरे ख्याल से उसने कहा था कि किसान की जिंदगी कीड़न मकोड़न की होती है। तो उसकी जिंदगी जो एक एक कीड़े की होती है, एक जो खेत में बस टहला करता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स बहुत ही मतलब, हम तो जब वॉक कर रहे हैं तो हमें तो ब्यूटी दिख रही है, रिवर खूबसूरत दिख रही है, हमें फार्म्स दिख रहे हैं, पर उसके अंदर की जो चीजें हो रही हैं वो उन तक कनेक्ट करना, उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए, क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन से आते हैं, हमने वॉक किया, लोगों से मिले, और जब वो वॉक करते हैं वो जितना भी परेशान हो, वो आपको बेस्ट से बेस्ट खाना देंगे, अच्छे से अच्छे रखेंगे, और सब कुछ आपको देंगे जो आप मेरे ख्याल से सभी लोग इसको मानेंगे।
और जो हमसे पहले फेलोज ने वॉक किया तो उन्होंने बताया था कि कैसे उनको विलेजेस में वेलकम हुआ और उनके साथ लोगों ने कैसे खाना और सब कुछ दिया। एक चीज और मैं बताना चाहूँगा कि सैंड माइनिंग की जो कुछ एक्सपीरियंसेस हुए, और हमें याद है सिद्धार्थ बोलते थे कि कैसे सैंड माइनिंग जहाँ पे वहाँ पे सेफ रहें। हाँ, सो मैं अपनी स्क्रीन एक बार शेयर कर लूँ। ये फोटो आप लोग देख सकते हैं सिद्धार्थ? जी। ओके, सो ये लास्ट डे मेरा था। ये अरोन अरोन तहसील में बरोद विलेज है, वहाँ पे सिंध के पास ये जो माइनिंग होती थी। यहाँ माइनिंग मेरे सामने नहीं हो रही थी। इससे पहले हम लोग ने कुछ प्लेसेस पे गए थे जहाँ हमारे सामने माइनिंग हो रही थी, पर वहाँ कभी भी डर या खौफ या घबराहट नहीं। इस जगह पे माइनिंग मेरे सामने हो नहीं रही थी, पर दूर से आवाजें आ रही थी और पता था कि यहाँ माइनिंग होती है, क्योंकि दिख रहा था जहां जहां मैं देख सकता था ये बजरी है। आप इसकी ये कंडीशन है, जितना भी देखते थे सिर्फ बजरी पड़ी थी। मतलब उसके जो स्मॉलर पेबल्स होते हैं सैंड वो निकाल ली गई थी, और जो लार्जर पेबल्स होते हैं वो उसका ये हाल था। इसका एक एग्जाम्पल अगर आप देखें तो कुछ इस तरह था कि ये एक फोटो डे 1 की है, जब पहले दिन मैंने एक रिवर को एक जगह पे देखा जहाँ उसमें आप दूसरी तरफ देख सकते हैं कि स्मॉलर पेबल्स भी हैं जो सैंड बनती है, और इधर पूरी जो छान ली जाती है उसको, और सिर्फ उसमें लार्जर पेबल्स बचते हैं। हाँ, तो ये चीज। और एक फोटो मैं दिखाना चाहूंगा, ये डे 1 की फोटो है। ये डामर की रोड के ऊपर नदी चल रही है। Aoun, we can still see the image with your hand. ओके, हेलो। हेलो। हाँ, हाँ जी, हेलो जो इमेज है ना आपके हाथ वाली विद जी। डे 1 है, ओके, अब सही दिख रहा है। एक सॉरी। You might have to reshare the. हाँ, ओके। हाँ, सॉरी, दिस वन। या हाँ, तो ये एक तरफ जो एक तरफ रोड है और एक तरफ जो सैंड होती है पानी की वो है। हाँ, और ऊपर ये हमारी सिंध चल रही है। ये डे 1 की फोटो है। हाँ, और इन सबके बीच एक चीज, मैं एक वीडियो दिखाना चाहूंगा सिद्धार्थ, वो आपको हमने जो वीडियो भेजा था पहला वाला। हाँ जी, उससे पहले मैं एक बात कह दूं, आप उस वीडियो को अगर देख लिए डाउनलोड हुआ है कि नहीं, हो या गया। पॉसिबल है। हाँ, तो उससे पहले पूरी जो भी हमारी वॉक थी, हमने जिस तरह से भी लोगों से मिले, जो भी अच्छा था उसमें बुरा था। पहले यही लगता था कि कैसे हमें लोगों को हमें जगह मिलेगी रहने की, हम कैसे चीज़ों को मैनेज करेंगे, कैसे लोगों से कहेंगे कि हमें आपके यहाँ टिकना है, खाना खाना है। पर 2-3 दिन बाद रियलाइज हो गया कि ये बहुत आसान है। टिकना खाना सबसे इजी था। जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट था, जिसके बारे में फिर हमने सोचा भी नहीं था, वो था टॉयलेट। कि आप टॉयलेट कैसे, और टॉयलेट ढूंढना एक अलग डिफिकल्टी थी। ढूंढने के बाद लोगों को कन्विंस करना कि हमें आप अपने घर का टॉयलेट यूज करने दिए। हाँ, और वो टर्म लैट्रीन्स ज्यादा बेहतर समझते थे। जब तक उनकी आंखें खड़ी होती थी, तब जब हम वर्ड लैट्रीन यूज करते थे, तब उन्हें रियलाइज होता था कि हाँ भाई, अब ये इसकी बात कर रहे हैं। तो कई कई मिनट लग जाते थे लोगों को कन्विंस करने में। उसमें कई एंगल्स लगते थे, क्यों, क्या मतलब। हमें उन्हें उस वक्त ज्यादा बताना पड़ता था अपने बारे में जब हम उनको टॉयलेट के बारे में पूछते थे। ज्यादा तब नहीं जब उनको जनरल सवाल कर रहे होते थे कि आपकी खेती कैसी है, क्या आप चीजें उगाते हैं, पानी की क्या समस्याएं हैं। तो ये भी एक चीज
ही देखने को मिली इसका। तो मैं इस तरह से एंड करना चाहूँगा कि आप लोग ने जो भी नदी को अभी तक देखा, एक नदी का एक अलग छोटा सा, उसको सोर्स के पास नदी की क्या कंडीशन है, उसका एक छोटा सा वीडियो है, अगर वो सिद्धार्थ चला पाए, देखें, वो आवाज के साथ अगर चल सके। जी मैं कोशिश कर रहा हूँ, 1 मिनट। वो जी आपके जी, साथ जो इशू हुआ था सेम इशू मेरे साथ हो रहा है। ओके। हाँ, तो अगर मे बी चल जाए तो हम आई थिंक इधर से ही बोल देंगे उसका, क्योंकि उसमें हमने उसी वक्त कमेंट्री की थी, तो वो याद है हमें। हाँ तो आप, मैं प्ले कर रहा हूँ वीडियो। जी, So this is hopefully I can hear the sound. Sindh, ग्रेट। I hope other people. near Mundro Sagar, Highway 752B. So, as one of the farmers said, that you can like cross jump over the River Sindh. We can see that we can really do that. Yes, we can do that. This is River Sindh. We're standing inside the River Sindh. Okay. जी तो सिंध की ये एक तस्वीर है, सोर्स से लगभग 4-5 किलोमीटर। और इसके आगे भी जब सिंध मिलती है तो सिंध कंटिन्यूस नहीं है, बीच बीच में उसमें पानी खत्म हो जाता है। 30-40 किलोमीटर के बाद इस टाइम पे सिंध में पानी, मतलब 1 महीने पहले की अगर आपको बताया, तो पानी रहता है। और 40-50 किलोमीटर तक का तो मेरा खुद का मतलब लोगों से पूछा हुआ है कि दिसंबर एंड जनवरी में सिंध में पानी नहीं रहता है। सिंध में पानी ना रहने का मतलब है आपके बोरवेल में पानी नहीं रहेगा। तो ये वीडियो से मैंने बस ये दिखाना चाहा कि सिंध की एक तस्वीर ये भी है जहाँ उसमें पानी इतना कम है और एक छोटी सी है। और बल्कि सोर्स अगर जो इसका माना जाता है, हाँ, जिसपे हम सिद्धार्थ बात भी कर रहे थे कि सोर्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे कनेक्ट करें, हाँ, वो ग्राउंड वाटर वाली बात। तो वहाँ जो तालाब को माना जाता है, जो लेजेंड है इसका, वो पूरा भरा हुआ है, उसमें पानी अच्छा खासा भरा हुआ है, पर आपको सिंध वहां से निकलते हुए नहीं दिखती है। तो अगर मेरे पास टाइम हो तो आपको जो दूसरा वीडियो हमने भेजा था, अगर वो पॉसिबल हो। ठीक है, मैं वो प्ले करता हूँ, बट देन उसके बाद वील पास इट ऑन टू वैष्णवी। हाँ जी, श्योर। वो वीडियो आप दिखा दिए, बस वहां पे एक सोर्स की पे दिख जाए लोगों को नदी। ये सोर्स पे नदी है, पर जो पानी आप देख रहे हैं ये नदी का पानी नहीं है, ये खेत का पानी, इधर जो खेतों का है वो पानी है ये। थैंक यू एवरीवन। Just to add that what we saw in the end was what the Sindh looks at its very source, close to its source, but the water that we saw in the stream was actually a runoff from the farms and not from what is called the source of the river Sindh, the pond at the source of the river. This particular footage was, I think, 801 kilometer away from the source. Right. Okay. Thanks, Aoun. I'll now invite Vaishnavi to share her stories. Vaishnavi. Hi, am I audible? Yes. Turn on my camera also. Great. Sorry, the light's not too great here. Just want to start off with an apology for my bad throat, but as long as I'm audible, I think it shouldn't be an issue. I'm just going to share my screen. One second. Oh, I think there's a lot on my screen. Okay. Okay. Hi, I'm Vaishnavi. Aoun and I walked together on the last stretch, which is from where
I think Bageshwer and Aishani stopped to, where Rahul and Aishani stopped to the upstream until the source, which is this video that you see on screen. This is a village called Gopitalaya. So this is at the very end of our walk. And we actually took a few buses to get here and didn't end up reaching here by walk. And I'll get to why. So this is Gopitalaya, and Aoun has already covered most of it, but I'll try to go on. This place has this lake, which is believed to be the birthplace of two rivers, Sindh and Sagada. And like Aoun mentioned, this is where the legend, the myth goes that there were two daughters of this Brahmin Pandit who used to come every day to this really empty looking land and just scratch the surface of the land and water would pour out. And they would use that to fill water and take it back to the cows. They would also bathe using that water. And this really confused their father because every time he'd go to this piece of land, there'd be no water to be seen. So one day he followed his daughters to see how they were making this happen. And when he reached the point where he found his daughters, they were bathing. And when they figured out their father was watching them, embarrassed, they both ran in two different sides, and one of them became the Sindh River and one became the Sagada. The continuation of this myth is that the daughters were so upset with the village where this incident took place that they cursed the village that for the rest of eternity, the village will not have enough water for agriculture and for farming. And if you speak to the villagers of Gopitalaya, they still believe that, because despite being so close to the source of Sindh and Sagada, they really struggle to get water. They have to drill bore wells which go thousands of feet deep, and they've also tried using old wells that are not bore wells, but they haven't found too much success there. But getting water for farming and for agriculture is still a struggle for the people of Gopitalaya, despite being at the source of the river. So this is where we started the walk. This was near Badarwas, where Aoun and I started walking. Yeah, apologies for the photo, but we came across a lot of these sections while walking across the river where it would split into two different parts, and you would have a small kind of a island over here. It's not visible in this photo, but deep in here there was a temple. I still don't know how people access that temple, but there were always people over there. And the river is such a huge part of people's religions and life in the area. So coming back to this, but over there throughout the river, as we kept walking, you would see a lot of temples, but not in the grand big temples that we usually see in cities or that are usually called Hindu temples. These are smaller shrines with just a single 2-3 photos of a god or a goddess with flags and threads. A lot of the farms that we walked across had these tombstones, which signified they had stone carvings of different gods they believed in, that would be placed on top of the dead bodies of their ancestors who were buried in the field along with the farm, along with where the crop was growing and right next to the river. There was a lot of connection between religion and the river, how people viewed it, be it in terms of the myth, the legend, the stories that come with it, or even them believing that the stories of those days still hold true in determining water patterns of the region, in determining water levels in the region, and how agriculture functions. So speaking about agriculture, some of the villages we walked through had these wells when they couldn't access enough water from the river. And then there was this where Aoun was talking about the pipes that are being used. At the end of this, where you see the river is a pump, and then they have pipes that connect from there to about 1-2 kilometers with leaking holes in the middle. It cuts through all kinds of terrain. I have cut this video a little short, but actually in the end of it, I trip and fall because there's a ditch
but the pipe is also going over the ditch. So it takes a lot of people, a lot of money, a lot of resources for farmers to get water directly from the river. But given the given the rainfall patterns that have been happening, given the water flow, given the water levels in the ground table, all of that has forced them to resort to such measures. I don't have a photo of the bowel here, but these three are the main ways farmers use water. So this is interesting because earlier in these regions, a lot of farmers almost exclusively grew soya bean. But as of the last 3-4 years, soya bean has been bringing them such losses that in the last year, one farmer told us that he couldn't even get the seeds to grow proper crops, to grow proper soya bean crops. So as of the last 3 years, they've shifted to corn. The thing with corn is it's a crop that takes way more water than soya bean. And in a region that is already water stressed, we've seen how farmers are resorting to digging out wells, bore wells that go thousands of meters deep. They're pulling water from kilometers away using thousands of pipes. In a region like that, it makes sense to question why would they want to go for corn, which is a lot more water intensive and takes up a lot more water than soya bean. And we ask them the same question. So in their cropping patterns, they ensure they grow crop right before monsoon starts. So they are not as dependent on their other water sources and can use just rainwater to have all of this growth. We also found packets of seeds and bottles of pesticides and fertilizers littered around the farms. This is mustard, as Bageshwer showed. There were mustard fields where we walked as well. So it was interesting to note how water in the region, be it from the river or rains, is now affecting what farmers grow, which in turn also will affect how markets change, which is something we're going to look into further. Another common thing we saw over there is something that has been quite a common talk recently in Delhi, which is about stubble burning. And when we talk about Delhi's air pollution, apart from the firecrackers and all of that, a very common topic that comes up is stubble burning. And we very frequently saw stubble burning in these agricultural farms. Despite that, the air around the river wasn't, the air where the stubble was being burnt wasn't nearly as bad as what you'd encounter in Delhi, which made me personally question, what does this say about stubble burning? What does it say about the politics of pollution in Delhi? What is causing the same activity that happens in two different regions? How do they have such drastically different results? That was an interesting thing to note during this. So these are the pipes that Aoun was talking about. We would frequently see, this is Aoun talking to one of the farmers. We would frequently see farmers carry truckloads of pipes. We would see people walking with pipes on their heads under the scorching hot sun, all just to ensure they get better irrigation for their fields. Now coming to the more social aspect of this walk for us. So we were going to walk for 10 days, but I cut short my walk in 5 days, and I think Aoun cut short his walk in 7 or 8 days. This is an experience that, so before we went on the walk, we had a call with Manoj Misra sir, and he told us that this walk will change your life. And I can definitely say that it did. I don't know if I can say if it changed it for the better, but it changed it in ways that I feel like I'm more aware of an India that exists beyond my bubble of privilege. Aoun is a Muslim man. I'm a Shudra woman. And while in South India, I am an upper caste woman who owns land and has a lot of power. In the North, I'm not middle caste. I'm still lower caste. And we both were treated exactly how we would imagine to be treated. Before we went for the walk, I think we anticipated a little bit of the flack that Aoun might be getting for his religion.
But personally, I absolutely did not think about the flack I would receive for my caste because, like I said, in South India, I come from a caste that holds way more power. So here and the photos that follow, every village we walk to, and I think this is a common experience with others also, it followed the same pattern where you walk into a village, you meet one person who's incredibly sweet and they tell you that they will give you food and they'll give you shelter and they'll give you everything you need and they're very hospitable. And then you walk into the village and you see more people, and then groups start forming around you and you have the feeling that you're being mobbed. And they either ask you for your Aadhaar card, or one thing that was very common in this region is the way they greet you is they say Jai Shri Ram and then they ask you Aapki Samaj kya hai, which is Jai Shri Ram and which caste do you belong to. For Aoun, there was a bit of confusion because his name is not particularly a common one. So until he said out his full name, there was some level of maybe we could get away with it. In regions we walk across, the caste is primary above all else. And my caste was assumed as low caste because I was more dark skinned than most of the others in the region. And my surname is Suresh. I don't have a caste surname. So one of them also guessed that I could perhaps be Ambedkarite because they are aware of how Ambedkar denounced Hinduism and took on Buddhism in Nagpur. So they believe that everyone who doesn't have a caste surname is of a lower caste. And a lot of them also weren't aware of South India as a geographic region and the very different nuances that comes with it. So I did try to lie about my caste and maybe even exaggerate about it being in a higher position. But one of the women straight up told me that I cannot be a Kshatriya because I'm too dark skinned for that. So we did face a lot of casteism, and Aoun definitely faced a lot of flack in the sense of religion. I remember this last day that we were in, so this photo is important because I think these two were the only Muslim people we met in a village, and they were so warm. And I think for me, it was the most comfortable I'd seen Aoun with anybody, which reminded me how much relief community can give you. And then coming to food. So like Aoun said, getting food was the easiest thing. No one would deny you food. But even within the way you were served food, different villages were really different with us. A lot of villages we went to, thankfully, would give us a whole plate of food with 3-4 different types of dishes. Or at least roti, dal, papad, achar. And then you would have villages like this where they just throw a few rotis in your hand, give you a few chilies, and then you just put it on your towel so it's not on the floor. It's similar with sleep. The first village we went to, it took a lot of convincing for us to let us sleep inside. So when we had spoken to the other fellows before Aoun and I went for the walk, we were told how a lot of times it was common that they would make the women sleep inside with the other women in the family and the men would sleep outside. That happened to us on the first day where I slept inside with the women in the family, and they were incredible and really open and welcoming. And then every day that followed, there was a bit of a dip in, for the lack of a better word, the quality of our stay. Second day, both of us slept outside on beds. Third day, we slept in this Panchayat Bhavan, which is a room for guests when they have events in the village. We somehow managed to hustle some bed sheets and the chatais, so it wasn't too terrible. There was just a lot of dust. The day after that, we slept on the floor in the high school. And then the day after that, which was my last day, we stayed in a temple. So every day it would, it's hard for me to also explain right now, but it would be this very slow pulling out of the promises that you meet the first person in the village and they talk to you about how they are absolutely welcome to hosting you, giving you food, all of that. And then slowly that changes, first with the men who start mobbing you in the village. And a lot of times
surprisingly or unsurprisingly, it was the women who weren't okay with us being in the homes with them. A lot of them, most of them weren't comfortable with letting us using the toilets, like Aoun said. So they were toilets. People from the villages were using the toilets. It's just we weren't allowed to use it. And I think it became clear to me on the last day when we cut short our walk, when Aoun and I woke up from the temple, and I just gone to use the loo close by, and there were a group of women standing in front of me, and I asked them if I could use the loo, and they repeatedly kept denying it. And I kept asking why, and they just kept denying it. And then they look at each other, speaking loud enough for me to hear and wanting me to hear it, I'm assuming. And they said something on the lines of, she is supposed to be cleaning our toilets, but she has the audacity to ask us to use our toilets. So definitely coming from a really privileged city bubble, it definitely was a shock. But also things that I have known as a reality in theory for so long, to see it happen to you in real life when you are in villages you've never been in a region you're not familiar with, definitely was a scary experience. And you could really see how much caste plays a role in these regions. They also do in urban areas, but I'm specifically talking about these regions. So this is a photo of the water we got from our first village. The first village. Vaishnavi, quick time check. Yeah, almost. So the first village we stopped at after our walk, we asked them for some water, and they gave us the water that they give the cows to drink. And then later, after we spoke to them and got along well with them, they gave us different water. But it's always on the assumption that people from lower castes simply aren't allowed to have the same kind of lifestyle as you. I think that was the biggest learning for me. But apart from all of the negatives, there was a lot that I walk away from, including finding a very good friend in Aoun. We did come across some incredible people. We went to this village called Nasira, which is a mixed caste village with the Adivasi Sarpanch. And the warmth they treated us with, it felt like we could relax for the very first time. We spent a lot of time in that village. If we hadn't reached there in the afternoon, we would have probably stayed there. We also met this really wonderful man who was talking to us about when Aoun mentioned that you get electricity in shifts of 6 to 4 hours. The previous night, his son was sleeping in the field to turn on the motor when it comes on at night. But when he went to turn on the motor, he got a shock and fell into the well. And they rescued him. It turned out to be okay, but we caught his father at a very frustrating point when he had just had enough of how farmers are being treated as subhumans, not being cared for when they get electricity. And like Aoun said, farmers' lives are like kide makode. So we spent a lot of time with that man and his family, who was really welcoming of us, including his granddaughter, who was incredible. The first village we stayed in, which was Ranjaghat, the women really, really opened up to me, and it felt like home in a lot of senses. So the experience, I don't have so much of technical, as in all the technical knowledge that I do has been covered by Aoun. But looking at it strictly from a sociological perspective or a societal perspective, it is really interesting how much religion and caste still plays a role. But we were also told a bunch of times that people in the village didn't trust us because they thought it was love jihad, or that we had eloped from our homes and run away to be together. This is despite us showing our Aadhaar cards, our Veditum identity card. So it was a very interesting experience for me, looking at the society in a way, way broader sense than I had ever known or seen. But that being said, now that it's been, and honestly, I think at that point, when we cut short our trip, it was also this persistent anxiety of always having to be alert. You don't know when what escalates into a much bigger thing. You don't know when they can call the cops on you. You don't know when they can get violent towards you. So for a lot of days, Aoun and I were never at peace and always just constantly alert, which also personally
was an obstacle in how I could view the river and the walk along the river. But now in retrospect, there was a lot more to it than the bad experiences, even though the bad experiences did seem overwhelming to a point where we had to cut short the trip. But like I was telling Siddharth, I would absolutely love to do this in a village in the south of India where my caste location and my language location is at a much higher status. And I wonder how that experience will be for me. Because apart from this being an environmental experience, it has really been interesting to see how it shapes so much of society also. But yeah, so I went all over the place, but that was the download of my entire experience. Yeah, that's me. Thank you. Thanks, Vaishnavi. I'm sure there's lots of questions. Thank you for sharing your experience with us. We go into the Q&A session now, but before that, there's a 2-minute audiovisual that we've prepared, taking video clips from the walk that the fellows had gone on. So we'd like you to take the next 2 minutes, watch the video, think about what all the 5 fellows have said, and then we'll start the Q&A session. In the Q&A session, I'll give everybody who's in the audience the option to unmute and speak, so you can directly unmute and talk. But for now, I invite you to come and watch this video. All right, here we go. Can't hear the audio, I think. Sorry. Can't hear the audio. Ouch. Okay. Okay. All right. I'm just gonna try and play this in a different way. Just give me a second. Sorry about that. Let's hope this works. Having some issue. One second. Let's hope this works. Let me know if you can hear it once I play it. Is it audible? No. All right. That's a bit troubling. So then I guess, yeah. Can we play from where you uploaded? Can we directly play it on that screen and do something That's like what that? I was trying, but unfortunately for some reason it's not working. I'm going to try one more thing. Aoun, was that audible? No. No. Okay. Just one last resort. Or otherwise, we'll just send it to everyone to watch it later on. Yeah. Okay. I'm going to give this one try.
Okay. Okay. Audible now? No. Not audible. Okay, then I think we'll just, It's the. sorry. I think there was some sound. No, I was just trying a hack, but okay, I will share the video. I was hoping we could play it now. But anyways, what I'm going to do is I'm going to quickly allow everyone to be able to unmute. So we will then take questions on audio. That'll be way more interactive. I'm just doing it one by one, sorry, for those who've not been. Yeah. Now, okay. All right, I think it's on for everyone. So if somebody would like to unmute and speak, please go for it. Hello, is someone speaking? I think there are a few questions in the Q&A section that maybe we can answer directly. Right. Okay. So maybe we can start with that. There's a question by Kiara which says, what do people say? There are more practical, technical, or human efforts in relationships in isolation. I'm not sure about the question. Kiara, if you're here, would you want to unmute and maybe ask that question? I'm not sure if I'm pronouncing your name right. Chiara, sorry. Okay, I've sent a request for you to unmute. Bageshwer? Yeah. Hello. Hi. Hello. I am Chiara. Chiara from Okay. Italy. For me, the language in English is very difficult. My English is bad. I have with me Google Translate. Okay. Mm-hmm. Okay. Okay. My question is for the population, for the difficulty of population. One difficult, human difficulty is strong or more difficult, practical, technical. Okay. It's difficult English for me. Sorry. Right. So, No worries. I'm not being able to understand, but any of the fellows are able to understand. Maybe you want to answer, or we can try and answer this question via email later on. If we can take some time and trying to understand. okay. Yeah. Thank you for all. Is a presentation, fantastic presentation for me. Thank you very much. Thank Okay. you. Thank you for joining. Then there's a question Thank you from for joining. Yeah, there's a question from Shubham. Shubham, are you here? Yeah. Do you want to unmute and just ask it? Hi, Siddharth. Hi. Yeah, so I've been through this event right from the beginning, and it was a great experience to hear you all the fellows had great stories to tell. I was keenly more interested because of Bageshwer and Pooja. While they were on their walk, they started off from Gwalior. I'm a resident here, and we know each other from college. So anyhow, that was the background. But hearing all the fellows, I just got to understand a bit more the overview of what this
movement is all about. But see, particularly when I was walking with both of Bageshwer and Pooja in my town, and we live in the forest of the all these what do you say, हम लोग सीमेंट के जंगलों में जो रहते हैं, and we try to look at things from our own lens, and there are different realities out there. So there is a limitation in one's understanding. So now I appreciate all your efforts, but my question simply is, especially to Bageshwar. Bageshwar, if you're hearing me, Yeah, I'm मेरे को hearing. पूछना था कि हाँ पाजी ये बताओ कि because I know you're preparing in particularly for the administrative part of the business, uh, and you have a great scientific knowledge. I always adore it. Having that scientific temperament, you walk through your journey. If you look at it in retrospect, is there any jugaad? Because we are Indians, हम हर चीज में जुगाड़ ढूंढते हैं. Is there any जुगाड़ के कोई middle path निकले? वैष्णवी का experience और बाकी और सारे fellows का experience, it was at a different, it's a whole spectrum. तो अभी हम लोग कितना दूर हैं, like sociologically and as well as scientifically, हम लोग उसको कैसे एक जो हम कह सकते हैं ना, सब क्या कह सकते हैं, सस्टेनेबल जो गोल्स हैं हमारे, वो चीजों में, मतलब I am not very clear with this, but I hope you can I understand. think I understand the question. So actually the thing is, what the major difference I saw is that how mindlessly the people were relocated, or they have to be displaced because of the construction of dams. On one side, I would say that yeah, it's an administrative thing, and dams have to be constructed in one way or the other to have the power security. But on the other side, if there is no other option and there has to be a displacement or relocation has to be there, then I think it can be more mindful, more experts, or maybe anthropologists should be involved in such kind of projects, so that they can they are the people who will understand, the local people, they have to be equally involved in all the decisions, because they understand very good, they understand everyone at a good level, their whole community. And that's how the whole, if such kind of, like if we are talking about sustainability, then that's how sustainability is possible, I believe, by the equal involvement of the community and the local people. Yeah, anyone else can add to it? Thanks, Bageshwar. Any of the other fellows, if you'd like to add to that answer? If not, then there's a comment by Aslam. Aslam, do you have a question around it, or is this only a comment? You can unmute and speak. हेलो. हाँ असलम. अच्छा, ये मेरा थोड़ा माइक खराब है, अभी मेरे को सुनाई नहीं देगा, लेकिन आवाज मेरी आएगी आपको. तो आई वाज देयर लाइक नियर, आई थिंक पन्ना के पास से की नदी जो बहती है, वहां पे था मैं कुछ एक हफ्ता, और वहां पे मैं वैष्णवी से के बात से काफी सहमत हूँ उस बात से. लेकिन मुझे बागेश्वर से भी ये पूछना है कि बेइंग वो भी माइनॉरिटी से है, तो उसको कुछ जैसे आउन को प्रॉब्लम्स आए, उस हिसाब से उसको कुछ प्रॉब्लम्स हुए या नहीं हुए. और मुझे जानना है सभी से कि ये नदियां के जब आप गुजर रहे थे, तो कितना जंगल और कितने जंगलों में आदिवासी या ट्राइबल लोग रहते हैं अभी भी, और वो किस तरह से, क्या आपने उनकी पता नहीं मुझे हर एक ने कितना टाइम बिताया है उस जंगल में, मगर क्या अभी नदी उनका एक सोर्स ऑफ रिसोर्सेस वहां से जोड़ते हैं उन लोग वहां से, और कुछ आदिवासियों का आपने क्या इंटरव्यू लिया है, बारे में पूछा है कि अभी ये नहीं बचेगा या इससे क्या होने वाला है, ऐसा कुछ? क्योंकि ये मतलब ये तो टाइम कम था, इसमें सारी बातें नहीं शामिल हो सकती है.
लेकिन मुझे लगता है ऐसा हुआ होगा, तो उस बारे में अगर आप लोग वापस से बात करते हैं तो मुझे जरूर बुलाना। ठीक है, तो आई थिंक असलम का क्वेश्चन का कुछ पार्ट्स हम ले सकते हैं। बागेश्वर, अगर आप स्टार्ट करना चाहें तो। जी, हाँ, मेरे साथ डायरेक्टली ऐसे इश्यूज नहीं हुए, क्योंकि ऐसा जैसे वैष्णवी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि किस तरह से सभी के साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए जात को लेके या कास्टिज्म को लेके। तो पहला सवाल गांव में यही होता था, आप कौन जात हो? तो उसमें मैं और पूजा साथ में जा रहे थे। तो पूजा, उनका पूरा नाम है पूजा चंद, और वो बोलती थी कि वो चंद या राजपूत डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। और मैं बोलता था कि मैं सिख रिलीजन से बिलोंग करता हूँ। देखने से पता चल जाता था। और साथ में ये कि हम कास्ट में या जात को मानते नहीं है, तो मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कौन सी जात को बिलोंग करता हूँ। यही मेरा जवाब होता था हर जगह पे। और इंटरेस्टिंगली कहीं बहुत ज्यादा नहीं इशू हुआ। बस ये चीज मैंने ऑब्जर्व की कि अगर आप ये कहते हो कि हम किसी जात को बिलोंग नहीं करते, तो उसका यह तात्पर्य समझा जाता है कि इनकी कोई जात नहीं है या लोअर कास्ट नहीं माना जाता, लाइक a bit above than the lower caste, but a level lower than the higher caste, somewhere in that level. That's what I understood. That's what we faced during our walk. And very interestingly, we met few Punjabi families there during our walk, and they were really supportive for both of us. And that was a really supportive part during the walk, that they 2 or 3 times they hosted us and guided us really well. Right. Thanks, Bageshwar. Any of the other fellows would like to add to this? Aishani, Yeah, I'll just add to briefly. So, sorry, like Aslam was saying, one of the villages where we felt very comfortable was Nasira, where it was a mixed caste village with the Adivasi Panchayat. But the first place we were in on our way to Rejaghat from Leherghat, a lot of the people who were doing the sand mining, the actual digging up the sand and putting it through the sea, all of that were Adivasis from the village. And there was this very specific way that the upper caste people in the village would talk about them. And there was a very specific difference in how they looked also. And I mean, I'm sure all of us know that India is a very, very poor country. And you could see that amongst the Adivasi families, the kids would be running around, clearly having bathed or brushed in days. And then the other families talk about, they call them the Adivasis. They quite possibly don't know their name or what they do beyond the sand thing. So caste also determines what your profession is going to be. In a lot of villages where people had a lot of land, they also get landless laborers to stay during harvest months for a month or two in these tarp kind of shanties. So also when we had to go asking people for food and stay, we couldn't always ask or ever ask the Adivasi communities, because they are already living in really less than bare basic amenities and food. So that was also interesting to see how the entire village is divided into like the section of Yadavs and Singhs, and then what they call the Harijans section. So it's all invasive over there. Right. Thanks, Vaishnavi. Aoun, you were also saying something? हाँ, फॉर द जंगल पार्ट जो असलम साहब पूछ रहे हैं ना, तो आई थिंक और लोग भी इससे मानेंगे कि जो सिंध है वो फार्मिंग बेल्ट में आती है, उसमें मेजर जंगल्स नहीं मिलेंगे, और गेहूं के लिए बहुत मशहूर है, सोयाबीन के लिए हुआ करती थी, और अब कॉर्न बहुत प्रोड्यूस होता है, इतना कॉर्न प्रोड्यूस हो रहा है कि लोकल मंडी में भीड़ लग जाती थी। हाँ, ये लोगों से सुना, न्यूज़ देखी। सो मेजर जंगल्स नहीं है, चारों तरफ आपको बहुत छोटे छोटे विलेजेस मिलेंगे, जैसे यूपी बिहार में विलेजेस होते हैं वैसे नहीं, मतलब विद अ पॉपुलेशन ऑफ 200, 400, 500, 50 घर, 40 घर, 100 घर के। हाँ, तो और ज्यादातर पूरे, मतलब अगर हम अपने 120 किलोमीटर की बात करें, जितना देखा उसमें हर तरफ आपको सिर्फ फार्मिंग मिलेगी, हर तरफ। जंगल्स का एक सुनते थे बस, एक कोई जंगल है, मतलब वो, और जो भी फॉरेस्ट एरिया आता था वो भी फार्मिंग के लिए होता था, या
जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने किसी को दे दिया है आश्रम को, उसको प्रॉपर फॉरेस्ट नहीं हमने देखे अपने स्ट्रेच में। Right. I think Bageshwer and Pooja ने forest देखे थे उनके stretch में, which was around the dam. हाँ, उनकी वाइल्ड लाइफ भी वहां दिखी, क्रोकोडाइल्स थे, हिरन ज्यादा थे। काफी हमने सबसे ज्यादा फॉरेस्ट के साथ साथ ही वॉक किया, फॉरेस्ट और नदी के साथ साथ। और आदिवासी लोग डायरेक्टली जो वहाँ पे छोला और सलैया की छाल उसकी गाद लेते हैं, और जो छाल अर्जुन की छाल है वो सब वो लोग वहाँ उसको फॉलो करते हैं, वो इनका मेन लाइवलीहुड है जो डायरेक्टली फॉरेस्ट प्रोड्यूस होती है। बागेश्वर जी, आपने एक फोटो दिखाई थी जंगली प्याज की, अनियन की। जी, आपको मतलब वो यूज होती है, खाई जाती है? हमने सुना है वहां पे कि लोग उसको कंज्यूम करते हैं, लेकिन डायरेक्टली कैसे करते हैं वो नहीं मालूम। मैंने देखा था उसके नीचे पूरा एक बल्ब होता है जो प्याज की तरह व्हाइट कलर का। ओके। तो शायद उसको कंज्यूम करते हैं, मेडिसिनली करते हैं, फूड में नहीं करते। ओके, थैंक यू। एक और क्वेश्चन है लियाकत सिंह वेघल का, वो शायद मेरे लिए एम है, लेकिन उसके पहले मे बी मनोज मिश्रा जी आप कुछ कहना चाहेंगे? आपके कुछ सवाल हैं या कुछ बोलना चाहेंगे आप? ओके, मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर। ओके, पहले तो मैं सब जितने पार्टिसिपेंट्स हैं इनको बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने ये सक्सेसफुली पूरा ट्रिप किया, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला इनको, और काफ़ी कुछ हमको भी सीखने को मिला इनकी बातों से। एंड आई एम ग्रेटफुल टू you all for doing this and for telling us. मैं सिंध और यमुना की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, सिंध जैसी, एक चीज मैं आपको थोड़ा बताऊंगा जो शायद बहुत ही करेक्टरिस्टिक है अबाउट यमुना। यमुना की जितनी ट्रिब्यूटरीज हैं सब में जिसको हम कहते हैं ravines, you find ravines on most of these tributaries, particularly when they are about to meet the Yamuna. And you know, ravines were always, not now, but for a long time, they were the place where dacoits reigned supreme. तो ये जो हम इतना कास्ट सिस्टम और इसके जितने इल्स हैं जो हमने सामने आके देखा, बहुत कुछ इसको हम ट्रेस कर सकते हैं फ्रॉम द dacoit days. एंड जैसे आपने खुद भी पाया कि there was a time when dacoits used to harass them during the night and the police during the day. तो ये जो बहुत strong casteist, because dacoits themselves were very casteist, ये जो आप देख रहे हो, ये इस रीजन का बहुत ही डीप रूटेड sociological phenomena है, which is very unfortunate, but that is the fact of life. And I don't know how many centuries it will take for all this to really dissipate into some sensible sociological changes. But having said all this, I'm really shocked on the experiences of Vaishnavi. And especially more so because Vaishnavi ऐसे एरिया से आती हैं जहाँ की उन्होंने इस तरह की चीज पहले कभी देखी नहीं, सोची नहीं,
एंड उनको फेस करना पड़ा, और साथ में फिर आउन रहे उनके. And I'm sure, I don't know if Vaishnavi is a journalist or not, but I'm sure if she were to become a journalist, this experience would go a long way with her as she analyzes her stories better. Sindh is a very unfortunate river. जहां कहीं भी possible था उस पर डैम बनना, वहां बन गया. और उस डैम के जो इल इफेक्ट्स हैं वो अब सब लोग देख रहे हैं. आई एम रियली सरप्राइज टू नोट फ्रॉम बागेश्वर कि वो कह रहे हैं कि डैम तो बनना जरूरी है. माय डियर फ्रेंड, नो, आज की डेट में किसी भी डैम की कोई जरूरत नहीं है. इट्स ए colonial thing that has come down to us, and हमने बिना सोचे समझे उसको अडॉप्ट कर लिया और उसको आज भी चला रहे हैं, बना रहे हैं. Dam is a very, it's part of the political economy of this nation, and a dam is nothing but corruption. During जब प्लानिंग होती है तब करप्शन होता है, जब वो कंस्ट्रक्शन होता है तब कंस्ट्रक्शन होता है, तब करप्शन होता है, और जब भी उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है तब करप्शन होता है. Dam is the worst symbol of corrupt nation that we have become. And I think more unfortunate is कि ये वॉक आपने इस समय करी. शायद अगर आपने ये वॉक 2014 से पहले की होती, maybe the experiences might have been little different, not much, because as I said, the dacoit heritage of this region has had a very very deep-rooted influences. And I also wrote in my, I never meant that your life will change in this manner, but you know, when you go out and you walk, the river starts speaking to you, and then you really change. You become a very different person than you were before that. And I really congratulate Siddharth on doing this, and please keep doing it. And if you ask me for more rivers, I will tell you more rivers. Thank you. Your fellow should walk along and keep it up. Thank you. Thank you. Thanks. Sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Manojji. For everyone else, Manojji has been a great mentor, and who's also spoken to all the fellows before the walk. He's been a great mentor for me also in learning about rivers and doing more work in the space of rivers. I will take a couple of minutes before we wrap up today's session. One is the question by Liakatbir Singh. Why did we choose Sindh? I think we started with a walk along the Ganga and then walked along tributaries or sub-tributaries of the Ganga. And slowly we've been expanding the rivers on which we are walking. And some criteria that we look at are rivers that are under threat, rivers that have been under-documented, and rivers whose stories are not there in the mainstream. So those are some key sort of factors that we use to choose what rivers that we can walk along and document, which may benefit the river, the environment, and the communities who live along those rivers. So I hope that answers your question. And then also we consult with mentors and experts like Manojji, who help us identify what are these rivers and what are the things that we can expect to see when we walk along these rivers. So that's that to that question of Liakatbir. There are only a few of us here, but still, because we're having this session, a lot of our work is donor supported, and we'd love for you to support the work that we're doing at Veditum. I will leave the link for donation to Veditum in the chat box, but I will also follow up with an email after the session where if you are able to,
please do support the work that we're doing. We can only accept donations from Indian citizens. And if you are from India, you like the work that we're doing, please do support our work. And please reach out if you have any ideas, if you any thoughts, any questions. We'll connect you with all the fellows who've spoken today. So that's that. Anybody else? Any of the fellows who want to say anything before we wrap this up? Wind this up. Vaishnavi, Aoun, Bageshwer, Aishani, Rahul. कोई कुछ बोलना चाहेगा? Thank you to everyone for joining, and special thank you to Siddharth for hosting this. And मतलब सबको बहुत शुक्रिया, मतलब इतने लोगों ने हम लोग की बातें सुनी. So I think a thank you in the end is must. Great. Okay. So thank you everyone. I'm going to stop the recording now. We will put this video on our YouTube channel in a few days. So then you can watch this again. We'll also send you a list of stories that our fellows have published, who you've heard speaking today, so that you can read in detail what they've written about their experiences, and we'll continue to write in the future as well. Thank you.